हे एवरीबडी, मैं हूं तरुण कपूर। वेलकम बैक टू माय चैनल एजू इम्प्रिंट्स। सो मैं आज आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन का मॉक टेस्ट 2 लेकर आया हूं। तो अगेन आई वांट टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू कि प्लीज़ बी ऑनेस्ट विद योर टेस्ट एंड अपने जितने भी करेक्ट क्वेश्चंस करे हैं उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। और क्योंकि ये एक सेंस ऑफ कंपटीशन डेवलप करती है आपके बीच में, सभी के बीच में। सो लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन है हमारा, Which among the following provisions of Indian Constitution have been taken from Constitution of Germany? जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से कौन से प्रोविजन लिए गए हैं? A. Suspension of fundamental rights during emergency. B. Concurrent list. C. Rule of law. D. Ideal of justice and preamble. So answer is सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। देखिए, कंकरेंट लिस्ट एंड जो हमारी जॉइंट सिटिंग है, दोनों बीच की चीज़ है। समझ लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमेशा सेंटर की चीज़ ली जा रही है। यूनियन और स्टेट के बीच में क्या है? कॉन्करेंट लिस्ट है, समझ लीजिए। और ऐसे ही जॉइंट सिटिंग डेडलॉक को सॉल्व करने के लिए होती है। तो इसलिए जो बीच की चीज़ है वो हमेशा ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली जा रही है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। रूल ऑफ लॉ A.V. डाइसे ने दिया है, तो ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से आया है, ठीक है। और जो जस्टिस है हमेशा रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से आता है, ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। द आइडियल ऑफ जस्टिस रशियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर्टिकल 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद A. इक्वालिटी बिफोर लॉ, B. प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, C. प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, D. फ्रीडम ऑफ रिलीजन। Answer is B. Protection in respect of conviction for offences. Question 3. Who described Indian Constitution as cooperative federalism? A. K.C. Vere. B. Granville Austin. C. Pandit Nehru. D. Morris Jones. Answer is Granville Austin, B. Question 4. Which among the following word was added to the preamble through 44th Amendment Act? A. Sovereign. B. Secular. C. Republic. D. None. Answer is D, because preamble में सभी words 42nd Amendment से add हुए थे। Fifth question is, anti-defection law lies in A. 10th schedule, B. 5th schedule, C. part 10th, D. part 7th. Answer is 10th schedule. Sixth question is, under Article 1 of Indian Constitution, the territory of India includes A. territory of states, B. union territories, C. territories that may be acquired by Government of India at any time, D. all of the above. So हम सभी को पता है आर्टिकल 1 में all of the above है, D. Question 7. First state established in independent India on the basis of language is A. Telangana, B. Andhra Pradesh, C. Punjab, D. Madras. So as we all know, in 1953 जो आंध्र प्रदेश को पहली स्टेट थी जो लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर एस्टेब्लिश हुई थी। Question 8. When an Indian citizen voluntarily acquires the citizenship of other country, his Indian citizenship automatically terminates. Is known as naturalization, deprivation, renunciation, D. termination. Answer question में ही था, D. termination. Question 9 is, who among the following is the ex officio chairman of Council of States? A. oldest member of the House, B. Speaker, C. Vice President, D. President. So ex officio chairman of Council of States कौन है? राज्यसभा. So answer is C. Vice President. Question 10. Under which article of Indian Constitution President of India and Governor of States enjoy the following immunities? Some immunities. Article 105, Article 361, Article 155, Article 361A. Article 361 is the answer, जिसके अंदर
जो प्रेसिडेंट है वो गवर्नर को कुछ इम्यूनिटीज़ हैं. Question 11 says Article 39A in Directive Principle of State Policy was added by A. 54th Amendment Act, B. 84th Amendment Act, C. 42nd Amendment Act, D. None of the above. So answer is 42nd Amendment Act. Question 12. Which article of Indian Constitution deal with financial emergency? A. Article 352, B. Article 360, C. Article 351, D. Both A and C. Answer is B. Article 360 deal with financial emergency. Question 13. Who amongst the following are appointed by the President of India? A. Governor of States, B. Chairman of Finance Commission, C. Election Commissioners, D. All of the above. Answer is all of the above. Question 14. Union budget or annual financial statement lies in A. Article 110, B. Article 143, C. Article 111, D. Article 112. Article 112 is the answer, option D, that deal with union budget. Question 15. Which statement is incorrect in relation to the Vice President of India? See, which statement is incorrect? Option A. A formal impeachment is required for his removal. B. Ex officio chairman of Rajya Sabha. C. His office modelled on the lines of American Vice President. D. None of these. So option A is the answer. Option A is incorrect with regard to Vice President because no formal impeachment is required for his removal. Question 16. Who act as the principal channel of communication between President and Councils of Ministers in India? A. Home Minister, B. Parliamentary Affairs Minister, C. Prime Minister, D. Vice President. Answer is C. Prime Minister act as principal channel of communication between President and Councils of Ministers. Question 17. Election petitions are heard by A. High Court, B. Supreme Court, C. President, D. Both A and B. So answer is option D, both A and B. Question 18. Which among the following is not a constitutional body? A. Union Public Service Commission, B. Election Commission, C. Niti Aayog, D. None of these. Answer is C. Niti Aayog. Niti Aayog means National Institute of Transforming India, erstwhile Planning Commission. Question 19. The official language of Supreme Court is A. English, B. Hindi, C. Urdu, D. All of the above. Answer is A. English is the official language of Supreme Court. Question 20. Which of the following is not suspended during emergency? A. Quo warranto, B. Habeas corpus, C. Mandamus, D. None of these. Answer is B. Habeas corpus is not suspended even during emergency. Question 21. Who among the following is the guardian of public purse in India? A. Comptroller and Auditor General of India, CAG, B. Parliament, C. Lok Sabha, D. None of these. Answer is A. Comptroller and Auditor General of India is the guardian of public purse. Question 22. How many duties are provided in Part 4A of the Constitution? Option A 12, option B 9, option C 11, D none of these. Correct answer is C. 11 duties have been provided. 23 question. Under which jurisdiction the Supreme Court have the power to determine the disputes between the Union of India and its states and between the states? Option A original jurisdiction, option B appellate jurisdiction, option C writ jurisdiction, option D advisory jurisdiction. Answer is
आंसर इज ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑप्शन ए, बिकॉज इन दिस जुरिसडिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट है डील विद द डिस्प्यूट मैटर बिटवीन द यूनियन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट्स एंड बिटवीन द स्टेट्स अंडर आर्टिकल 131 131 के अंदर होता है ओरिजिनल जुरिसडिक्शन. Question 24. The word state is defined under which article of Indian Constitution? Option A Article 13, Option B Article 37, Option C Article 12, Option D both A and B. Answer is C Article 12, जिसमें state की definition mention है. Last question. What is maximum period of national emergency in India? A maximum 3 years, B maximum 1 years, C indefinite period, D maximum 5 years. So answer is C indefinite period, because हर 6 महीने के बाद पार्लियामेंट की अप्रूवल के बाद हम जो अपनी इमरजेंसी है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं और ये इनडेफिनेट पीरियड के लिए बढ़ सकती है. सो बी वेरी ऑनेस्ट विद योर आंसर्स. नोटबुक में लिखिए और कमेंट में ज़रूर सभी बताइए कि किसके कितने मार्क्स आए हैं, ताकि आपको पता लगे आपकी क्या जो आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं. ये डीमोटिवेट किसी ने नहीं होना है. हर एक को अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखना है और वीकनेस को भी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है. सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल टू मोटिवेट मी, and if you have any doubt you can ask in the comment section. So see you in the next session.